Hello and welcome, folks. Yet again, you are watching eISL Season 2 brought to you by Nordwind Gaming. And it's a fresh new week. And well, it's Tuesday night, and we did get to see one of the highest goal scoring games just previously right now. And we are going to be expecting nothing less from the fixture that we have just planned for you for tonight. But before all of that happens and all we begin, I have my co host along with me. It's going to be TT. So, your impressions on the first game? Okay. All right. So, I mean, a few glitches here and there. I think TT's voice would be there for you guys in a few more seconds. But right now, this one is going to be an interesting matchup. Like TT was just trying to say that from a fan's perspective, ATK Mohan Bagan fans might be a little bit disappointed, but it was such an end-to-end game. And they took a few risks. But Chennai FC finally managing to see it through. But here we have today's matchup. It is going to be Jamshedpur FC taking on Bengaluru FC, and the game number one is going to be an absolute cracker because you've got Arvind whacked, who just whacked at the Zima. I think 5 goals in the last time they met against Charanjot, a player who's not considered a player anymore in this region. He's a demon, but well, he was slayed by Shubham last time, 3-0. So a lot on the line over there. And then for the game number 3, we've got DK taking on Shagnik. So this is also going to be a pretty interesting matchup. But the first one, TT, is the one that I am and I'm pretty sure all the fans are most excited about. फॉर श्योर क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि लाइक चरणजोत यूजुअली वो जिस तरीके से डोमिनेट करते हैं प्लेयर्स के ऊपर एंड जिस तरीके से वो खेलते हैं वो हारना पसंद नहीं करते बट पिछले दिन 3-0 से वो हारे थे तो आज वो एक बदले का आग जो है वो उनके अंदर रहेगा वो चाहेंगे रिवेंज लेना बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करते हैं अरविंद की तो उनके तरफ से भी हम लोगों को इसके पहले ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला है एंड आई थिंक इवन अगर हम लोग बात करें जमशेदपुर की तरफ से सो वही एक प्लेयर है जो कि बहुत बेहतर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो लेके जाए एंड पिछले मैच में तो वो 5 गोल्स भी लागे थे तो ये मैच बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इजी तो बिल्कुल नहीं होने वाला चरणजोत के लिए आपने सही कहा कि शायद ये आज का वो होता है ना कि हर एक मैच के बीच में एक सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर मैच होता है जिसपे एकदम टिकट सोल्ड आउट हो जाता है तो मेन इवेंट या तो ये एक मेन इवेंट होने वाला है आज के दिन पे And right now, as we're talking about all these clubs, let's take a quick look at the team of the week and find out, or in fact, not just the team. We'll talk about the teams later on. Let's talk about the skill of the week. Who did perform the best skill moves? And I think it goes to Varsi. I think this is one of those goals I remember with Jarzinho. Beautiful elastico towards the end and just went in through. And in fact, not an elastico, it was a heel to heel in that final moment and performed to perfection. And it's not just a skill move over there, it's his composure and his sheer decision making. Because, usually when we are 1v1 against the keeper, what we do is either you go for a ball roll, that's a simple way out, or just try to chip the ball, or maybe if you're a little far, then take an L1 R1 shot, right? The power shot, like we call it. But he did something different. He was so sure that in a professional game like this, when the stakes are so high, he still opted to go for a skill move. And had there been a छोटा सा भी मिस्टेक ना, सब खत्म हो जाता। बिल्कुल एंड जिस जगह पे उन्होंने किया उस हिल टू हिल के बाद आई थिंक गोलकीपर भी सोच रहे थे मेरे साथ ही क्यों होता है तो उसके बाद डायरेक्टली वो फिनिश हुआ बैक ऑफ द नेट एंड बहुत शानदार था एंड आई थिंक इसी वजह से इधर बेस्ट स्किल मूव का जो अवार्ड है इस वीक के लिए वो गया था वर्सी के पास एंड वर्सी की अगर बात किया जाए हम लोग जेनेसिड के बारे में तो बहुत बात कर रहे थे जब भी उनके टीम के बाद आता था बट पिछले गेम पे जिस तरीके से वर्सी ने स्टेप अप किया एंड अपनी टीम को उधर से जीत दिलाया
वो बहुत बहुत ज़्यादा शानदार था एंड इससे एक चीज़ पता चलता है कि जब जिसकी ज़रूरत होगा वो स्टेप अप कर सकते हैं एंड कोई भी दोनों में से एक मैच जो है वो निकाल के लेके जा सकते हैं एंड ये स्टेटमेंट बाकी सारे टीम्स के लिए एक का खतरे की घंटी की तरह था। बट जो ये गेम है चरणजोत वर्सेस अरविंद, ये गेम में कितने गोल होंगे? मुझे तो लगता है कि हाई स्कोरिंग मैच बिल्कुल नहीं होने वाला, बहुत क्लोज खत्म होगा, शायद 1-0 और 1-all मे बी, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 गोल्स का फासला रहेगा, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच तब होता है जिस टाइम पे आपका एक टीम का डिफेंस थोड़ा लूज हो, अटैक बहुत स्ट्रांग हो, बट इधर दोनों का ही जिस तरीके से वो लोग डिफेंस पे प्ले करते हैं उसी तरीके से वो अटैक पे भी स्ट्रांग है। सो मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग गेम हो सकता है। बाय द वे हम लोग यूजुअली नॉर्मली देखते हैं 1-0 2-0, पिछले गेम देखने के बाद बात करना पड़ता है कि हाँ लो स्कोरिंग गेम होने वाला है। You know, TT, I think this is where I have a different opinion because I feel either this is going to, end with no goals being scored, or if it is going, then it's going, 3-0 plus, or, at least 3 goals difference, because it's like either this or completely that. There's nothing in between because it all comes down to the temperament of these players, because we know that Arvind and Charanjot are two amazing ones, and Jamshedpur FC, in fact, Arvind giving no breathing space. The match has begun and instantly just went in through that left wing. So once again, ladies and gentlemen, Jamshedpur FC, they're playing from left to right, as you can see. And now we've got CJ from right to left for Bengaluru FC. Bengaluru FC considered as one of the most deadliest team, in fact, deadliest clubs in the eISL. And Charanjot, after losing his game to Shubham, this time he must be spitting fire. Yes. देखिए ये मैच को शुरुआत होते हुए सिर्फ और सिर्फ जस्ट 11 मिनट हुए, लेकिन उसी के बीच में देखिए पहला अटैक बन सकता है जमशेदपुर की तरफ से। राइट हैंड साइड से हकीमी, एडम मिलिटाओ मौजूद थे जिसकी वजह से वो पास पूरा नहीं हो पाया था। बट जमशेदपुर ज्यादा सोच नहीं रहे, वो फुल्ली चढ़ के खेलने की कोशिश करते हुए एम्बापे, हालांकि इधर से भी एक हम लोग को ट्रेवेला दिख सकता था अगर वो फर्स्ट टाइम शॉट लेते, बट नहीं, थोड़ा सा टाइम लेके खेलने की कोशिश एंड शुरुआत है, आई थिंक टाइम लेके ही खेलना चाहिए। Yeah, I think, at least Charanjot knows that Arvind is a formidable opponent. You just cannot rule him out. And now this could have been a good chance, but Charanjot is taking his sweet time with Lionel Messi towards KDB. And this is a perfect chance. And there you go. Just takes a beautiful, beautiful low-driven shot. And no problem for CJ. And there you go. The celebrations are in pretty early for Bengaluru FC. शानदार फिनिशिंग, एंड ये फिनिशिंग, इससे एक चीज तो पता चलता है कि वैंडेसार को अगर आपको बीट करना है तो आप ग्राउंडेड शॉट खेल सकते हो, क्योंकि उनका जो रिफ्लेक्स है यूजुअली थोड़ा कम रहता है बाकी गोलकीपर से। सो वो रिफ्लेक्सेस जो है वो थोड़ा स्लो है, दैट्स व्हाई इधर ग्राउंडेड बॉल होने पे उधर रिफ्लेक्ट करना एंड वो जब तक हिलते हैं तब तक गोल चला जाता है। एंड आपके पास एम्बापे है, सो ग्राउंडेड शॉट भी पेस बहुत ज़्यादा रहता है। बट ऑन द अदर हैंड चरणजोत यूजुअली वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। यस, ये पिछले दिन भी हुआ था, वो शायद बार बार भूल जाते हैं, लाइक एडरसन को लेके आ जाते हैं फिर उसके बाद वो चेंज कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। It's like, yeah, I don't need much subs anyways. I just make a few more changes here and there, and that's pretty much it. And Bengaluru FC, in fact, Charanjot off to such a nice start, and looks very calm, looks very composed, knows what to do after every single pass he makes. Now this time with Mbappe, directly goes for a green time shot, but not from the best possible angle. And Arvin getting in Lucio instead of, I think, Maldini. So Lucio used to be one of those players that we used to see a lot before the Team of the Year cards came up, and Maldini has always been there, but players kind of prefer it. We've seen some players also played from their fullbacks, but this time Arvin looks really deadly on his attack. A little delay, and Edem Militao for the rescue. And now Charanjot again back on building his attack, but does not have enough numbers. But this blistering pace of Mbappe looks like another goal in the making. No, misses. Yeah, Van der Sar finally एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल बचाते हुए, बाय द वे अभी भी खतरा नहीं टला।
बट रूडुलित से बॉल कहने की जो है रूडुलित आए और छीन के लेके चले गए। एक बहुत शानदार मूव बनता हुआ दिख रहा है, बट देखिए मूव तो बनेगा, उसको फिनिश करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेलिंगम टुवर्ड्स रूडुलित से थियो हर्नांडेज, बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन चलता हुआ फिलहाल के लिए गेम, बट ऑफसाइड। Yeah, even I felt. And one more thing that we could spot is CJ likes to play KDB right from his starting 11, in his starting 11, right? Usually we see KDB coming in during those substitute moments, but now look at that, a beautiful pass given towards Ronaldinho, and look at the vision of Charanjot. He does not, directly want to make those panic passes in those final third. He takes his sweet time, but now this could be one good possible opportunity created. Tried to go for that driven through, but no, failed. And now this is where CJ again would want to capitalize. This time, however, trying to build that play from the wings, pass it on towards Ronaldinho, and has to enter in. But rather prefers KDB again. 1-to-1 good passing going on between them with Lionel Messi again towards Ruud Gullit. And constant passes, and now takes a shot, but misses. बट आई थिंक एक चीज जो कि हम लोग बार बार देख पाते हैं, शायद वो कुछ कारण के लिए, एडरसन मॉरिस के बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे, शायद उसके पीछे कारण भी यही है कि वो केडीबी को खिलाते हैं तो उनका जो केमिस्ट्री है वो फुल करने के लिए हो सकता है, क्योंकि पीएसजे के 3 प्लेयर आपको देखने के लिए मिलेंगे, इधर मेसी खेलते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, एम्बापे एंड विद हकीमी एज वेल, लेकिन उस जगह पे केडीबी के लिए कोई भी नहीं थे केमिस्ट्री बनाने के लिए, शायद उसकी वजह से एडरसन को लेके आते हैं और उसके बाद वो सब आउट कर देते हैं, तो ये एक कारण हो भी सकता है। बट देखिए उसके बीच से बन रहा था मौका मेसी, बट नहीं, बॉल छीना गया जमशेदपुर की तरफ से, बट अरविंद अभी तक फिनिश नहीं कर पाए, उनका जो भी अटैक वो कोशिश कर रहे थे बनाने की, वो अभी भी पूरा अटैकिंग थर्ड तक पहुंच नहीं पाए। I think one thing for sure, now we've hit that halftime whistle, and it's halftime, and we'll be on with the second half in just a few minutes. But yes, I think so far, one thing we can really agree upon is that Charanjot has been the better player. We've seen Arvind, he's been relying on those counter attacks. There have been moments, I think once or twice, where we could see there was a goal brewing up. But overall, if you talk about how this first half has been, it's pretty much CJ creating chances back and forth. And the worst part is he's not going for those, out of the world skill moves anymore. He's relying so much on those clean passes. Look at that. Constantly not keeping the ball on him a lot longer on a single player. Rather just trying to trick Arvind into thinking where would the next pass go. And L2 long ball being given over here. And now Arvind needs to make a comeback. So far, it's, by the end of the first half, we thought maybe CJ is going to score 2 or 3, but it's just 1 goal. And now this is a beautiful chance. What? The small smile. अरविंद के चेहरे पे वो जो स्माइल था, उससे सब कुछ जो कहानी है वो बयां हो गया कि क्या हुआ उनके साथ। अनलकी। I would have just quick sold my Eder Militao had he done that right now. It's a team of the year card, and that is sometimes so difficult. How could he make such a mistake like this? And now Charanjot is leveled up, and Arvind just scraping that goal, and even he is baffled. Like, how did that go in? And this is another reel in the making, ladies and gentlemen. But Charanjot trying to go for a back cut back, but did not work out as Arvind. Now, since he has equalized, he's got to play with a lot more vigor. Let's see what can he make out of this chance. But no, Charanjot seems to have broken loose. Just one player, one defender to beat, and in fact, rather stall the play and goes for a few more passes. A beautiful step over, could be another chance. And what? मेसी was in offside position maybe, जिसके वजह से मेसी ने बॉल को रिसीव नहीं किया, एंड अभी भी अटैक पे बॉल बना हुआ है, वो जो स्किल मूव पर वांडे सर
बचा लिए बाल बाल, नहीं तो जमशेदपुर एफसी फिर से एक बार पिछड़ सकते थे इस गेम पे। ओह क्या हो रहा है, लाइक हार्ट अटैक आ जाएगा जिस तरीके से इधर गेम चल रहे हैं अभी तक। This is a very different kind of a gameplay going on right now. When we thought that we could get to see some really amazing out of the world goals, no doubt. I mean, the first goal that Charanjo scored was a very clinical one, a very decisive one. Then suddenly Arvind scores a scrappy one, and then these kind of chances make you into thinking. And in fact, it was such a nice elastico, just goes in, takes that shot, and he had done that perfectly. But maybe instead, I think he did not green time that shot. Maybe could be one of those reasons. And Van der Sar, of course, has that long reach, right? Now, I think few substitutes have been made over here. And KDB, I guess, is he still there or has he been replaced? I think still there. या वो अभी भी हैं मोस्ट प्रोबेबली, बट उनको शायद चेंज करा जा सकता है। बट जो फर्स्ट चेंज था वो अल्वारेन को लेके आया गया है मेसी के बदले, एंड मेसी को तुरंत इधर हटा दिया गया जिस टाइम वो ऑफसाइड पोजीशन में मौजूद थे। एंड ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा मौका था, अगर थोड़ा भी नीचे रहते तो गोल स्कोर हो सकता था। बाय द वे, थियो हर्नांडेज टू अल्वारेन, एक बार फिर से बनता हुआ अटैक टुवर्ड्स एम्बापे, नहीं वर्जिल वैन डाइक, एंड एक गलत पास भी कहने के एम्बापे की तरफ से था। बट भाई एनी हाउ बॉल कंट्रोल पे तो है अभी भी चेन्नई एफसी के पास, फिनिश करेंगे। ओह व्हाट अ गोल! वैन डर सार देखते रह गए, उनको पता चलने से पहले ही बॉल इतना अंदर आ चुका था कि वो उनके जंप करने के बावजूद वो पकड़ नहीं पाए। वाओ! And I don't think that shot was hit with a lot of power either. It was a decent shot, but yeah, I think the keeper just could not make himself get in that right position. And again, CJ capitalizing with just 20 minutes remaining inside the game, tried for a player lock on Mbappe, but eventually realized that the defender had come in, so had to go for, or in fact had to look for other avenues. Now KDB towards Ronaldinho. This time CJ has been constantly just keeping that passing game on. Wow. And I'm pretty sure it's already more than 150 passes being made. But Arvind needs to find a breakthrough because needs to equalize this. Looks really close and hasn't been the best player in the field so far. Charanjot had been keeping majority of the positions. Arvind needs to wake up into senses. I think with 15 minutes left, tried for that long cross, but did not connect. Wow. And yes, 173 passes अभी तक हो चुका है Told you. बेंगलुरु एफसी के तरफ से। बट आई थिंक एक मौका फिर से फिनिश करेंगे, एंड उसी के साथ 3-1 का बढ़त मिलता हुआ, एंड कोई भी और कमबैक आई डोंट थिंक किधर होने वाला है। हालांकि एक ही मैच में हुआ था इस पूरे इंटायर eISL सीजन 2 के अंदर, वो था ईस्ट बंगाल वर्सेस केरला ब्लास्टर वाले मैच पे, जिधर आखिरी के 5 मिनट पे 2 गोल स्कोर हुआ था। उसको छोड़ के देखिए, वो चीज जो है वो बार बार करना इजी नहीं है, एंड वो बार बार होता भी नहीं है। सो इधर आई डोंट थिंक कि और होगा, बट चरणजोत जिस तरीके से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, इट वाज इनसेन। Oh yeah. I mean, this was coming, right? This was coming. We had anticipated that somebody, amongst the two will be the better player, and Charanjot clearly was, and this time went for a different kind of a FIFA. Usually, what I've seen Charanjot do a lot is he goes for those, skill moves towards those end moments, and always confuses his players. And realize that this is something maybe my opponents are coming to understand, and they're preparing accordingly. So let me try to change my style of play. This time he's been going so much, relying so much on those short passes, and one of those reasons is why I think KDB has been bought up instead of Jarzinho, who's sort of been the go-to right central midfielder if you're playing that 4-3-2-1 formation. So, and he's been making it all, he's just aligning it all so beautifully. And now this time Arvind on his break, but does he have enough time? It's a foul, but what can he get out of this one? ओह, एक और बार बिल्ड हो रहा था,
बट इस बार बॉल छीना गया है एंड आई थिंक जिस एरिया पे बॉल इधर छीना गया बेंगलुरु एफसी की तरफ से, एक और गोल आ सकता है। लोवारेन ऑलरेडी रन निकाल चुके हैं, क्या एक और गोल होगा? पहले टुवर्ड्स लोवारेन एंड फिनिश, चौथा गोल एंड बेंगलुरु एफसी चरणजोत कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे अरविंद के लिए। यही वो अरविंद है जो पिछले गेम पे 5-1 के साथ जीत के आए थे एंड यही वो चरणजोत है जो पिछले गेम पे 3-0 हार के आए थे एंड वो रिवेंज लेते हुए देख रहे हैं, वो हारते हुए देख रहे हैं इस ग्राउंड के ऊपर एंड अभी भी 4 मिनट बाकी है और एक गोल आ सकता है। I like that L2 pass, just a back heel one. But yeah, see, I told you, TT, right? It's either going to be a very close game or it's going to be a very, huge goals game where there could have been a potential fifth in the making. Tried to take a shot with Pele, but now all it went out for was a corner. But now this is a beautiful break. You can see Mbappe already on the loose, tried to go for that driven through, but the elevation was just not there, and the defenders were present. Out it goes for a throw, and now, I mean, it's pretty much done and dusted, right? The final attack of the game by Arvind, and he knew it was going to be a tough game for him. And there you go, the final whistle blows even before him trying to take a shot. But that is it, 4-1 scoreline, Bengaluru FC off to another beautiful start. Last time, had they won their game, they would have been, sharing the top of the leaderboard spot with Goa, FC Goa. But that was not the case. And today, they are going to be looking to clinch those 3 points. But hold on, we still have 2 more games remaining. Yeah. एंड वो 2 गेम्स पे क्या होगा वो तो हम लोग ऑब्वियसली देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग से ही क्लोज तो था। लाइक स्टार्टिंग की अगर बात किया जाए तो अरविंद बहुत सोच समझ के खेल रहे थे, बट ये गोल ये प्रॉपर क्लास था, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने लाइक टॉप राइट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर तो देखे हैं, बट जो ग्राउंडेड गोल्स होते हैं वो मारने के लिए आपको प्रॉपर जो एक प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत होता है। अगर आप थोड़ा भी ज्यादा करते हो तो हाइट ले लेता है, थोड़ी कम करते हो फिर तो पावर ही नहीं रहता। तो उसके बावजूद जिस तरीके से गोल स्कोर किया गया था बहुत ज्यादा लाजवाब, एंड उसी के साथ ये लकी गोल था। अगर अरविंद के गोल की भी बात करें तो वो भी एक लकी गोल था, अदरवाइज चरणजोत ने कोई भी मौका नहीं दिया इधर अरविंद को इस मैच में। And the worst part was he was the one controlling. It was not even the AI. So he did not have anybody to blame. But this goal, I mean, the way he broke through with that step over, and it was so beautiful. And it was just pure CJ magic. I mean, look at the number of passes he's making. And in that moment, I wouldn't have been even surprised had Mbappe passed it onto a goal all over and there and still taken a shot. Charanjot would do that. And he has been doing that constantly, with all the games that he has played. Look how simply he's just scoring goals for fun, and has managed to beat Arvind, who did defeat Adizima last time. It was a 5-1 scoreline, and suddenly Arvind has been bested by CJ. But now we have game number 2. I mean, for all the Jamshedpur FC fans, it's still not done and dusted, because we have the co-op matchup remaining. So somehow, and anyhow, they have to in fact win this game. Otherwise, there will be nothing to really fight for in the third one. जी हाँ, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो जब हम लोग को शाग्निक गेम में आते हुए दिखे हैं विद लाइक कोच, ऑब्वियसली उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हुआ है, एंड वही चीज़ शायद हम लोग एक बार फिर से देखने के लिए मिले। बट जमशेदपुर की जब हम लोग बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी जो परफॉर्मेंसेस है, अगर हम लोग इसके पिछले गेम्स की बात करें तो उस पर कहने की कोशिश उनका यही रहा है कि वो अपना बेस्ट दे पाए। बट जो फर्स्ट मैच था एफसी गोवा के साथ वो जीत नहीं पाए थे, वो हार गए थे जमशेदपुर, एंड उसी के साथ कहने की जो ये आज का मैच है ये उनके लिए टफ होने वाला है। सो उनको बाय एनी हाउ कोशिश करना होगा कि वो इस मैच में एटलीस्ट ड्रॉ निकाले, नहीं तो प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। Yes, but of course, FC Goa is such a formidable team. That's why they are on top. But you know what, folks, we've got something for you. We've got the top 5 goals that have been scored from the past week. So let's take a quick look at that.
You know what? It is so many goals were scored the last week that it's very difficult to kind of make a list of the top 5 goals. I felt, maybe a top 10 would have also not sufficed. But regardless, we got to see those amazing goals on display, and everyone was just better than the other. And this is the beauty of this tournament, right? When you've got all these best players from the country fighting it out for the respective clubs, it is inevitable. It's bound to happen. You see some magical moments. You see some, more disappointing ones. You have your hearts broken. Sometimes you just roaring with joy. And I see a gold Henderson there. I think she's. It's high time you get the changes done, or like you said, for maybe for the game. But when we get this, oh, there you go. Instantly, the pause has been cute. So I think I don't know if Kem is the best reason, because when you're looking at that KDB, it's a team of the year KDB. Do you even need Kem on a card like that? मे बी लाइक या वो तो अभी प्लेयर्स को ही पूछना होगा। बाय द वे जब भी वो इंटरव्यू के लिए आएंगे ये एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री जो है वो आपका कभी कभार एंड स्पेशली इस लेवल के ऊपर जिधर दोनों ही तरफ से प्रोफेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो मे भी ज़रूरत हो सकता है जिसकी वजह से खेला जा रहा है। एंड अभी के लिए तो आपके पास शायद 5 सब्स्टिट्यूट रहता है, सो अगर आप एक यूज़ भी कर ले तो शुरुआती में तो वो उतना ज़्यादा बिग डील नहीं है, एंड आप बाद में भी 4 सब्स्टिट्यूट और कर सकते हो। सो आई थिंक ये एक हो सकता है कि जिसकी वजह से किया जा रहा हो। बट देखिए मौका बन चुका है, फिनिश कर सकेंगे कि नहीं? नहीं, डायरेक्टली वैंडसर के हाथों में मार, एंड कोई भी और गोलकीपर होते तो शायद इसी तरीके से सेव कर लेते। Yeah, should have gone maybe for the right side, right post, right? Went in for that left one, just where the goalkeeper was there. Had he gone for the far post there, could have potentially scored. But it's so difficult. It's easier said than done, Titi. We know that in those final moments, you just tend to take the shot and just pray that it goes in. But now again, Chennai FC spearheading their attack with R9. All right. The defense looked a little off there, but somehow they managed to get back to the senses, or maybe not. Virgil van Dijk being that wall yet again for his club, and that shows how important this player is. His defensive awareness is on a whole different level. And when you're talking about the team of the year, Virgil van Dijk is undoubtedly the best defender in the game, I must say. नॉट श्योर। एंड अभी तक जितने भी eISL सीजन 2 के अंदर हम लोगों को क्रूशियल इंटरसेप्शंस देखने के लिए मिले हैं, वो हम लोगों को वैन डाइक की तरफ से ही देखने के लिए मिले हैं। बट हालांकि पिछले वीक पे एडम मिलिटाओ बहुत ज़्यादा वैसे क्रूशियल कर रहे थे इंटरसेप्शन, बट आज कुछ अलग ही कर दिया लाइक पिछले मैच पे। बट लेट्स सी इस बार किस तरीके से खेलेंगे। बट रोड टू लीड टू रोनाल्डो टू मेसी, कोशिश था कि आउटस्कट करके बॉल निकाल के लेके चले जाए, बट वो होने नहीं दिया गया। काउंटर पे चेन्नई एफसी, बेंगलुरु एफसी, सॉरी फॉर दैट, राइट हैंड साइड से आगे बढ़ रहे थे, बट फाइनली जो पॉज के लिए क्यों किया गया था वो हुआ, एंड अभी एडरसन मोरिस बाहर जाने वाले। And yeah, still that cold Ederson, and thankfully Jamshedpur FC did not try to take any shots. But undoubtedly, Ederson is still a beautiful goalkeeper in FIFA 23. We've seen, at least in my vision, I've seen a lot of Edersons also come up. So, but yes, Virgil van Dijk, one of the finest defenders in this game. But maybe in the next edition, whatever it might be called, I think EA, whatever name they go for, Van Dijk will have reduced stats, because these injuries in real life has been processing a threat. But look at this. Oh, for a moment I had a mini heart attack, because had that cutback gone through and had those defenders, just made even a small mistake, that would have been a second one going through. But Jamshedpur FC not giving them any chance to breathe, and trying to initiated a counter attack, but realized that did not have all their men at the right position. So we'll have to stall it, keep the possession on. And now with Lionel Messi
Beautiful pass on towards Ronaldinho. Good coordination being displayed. And this could be a goal where it is classic Charanjot. You know, get the ball, pass it. And now it comes down to Shagnik if he scores or not. But no wonder. It's been dealt with. And now Jamshedpur FC, they're back on their attack. Yeah. एक गलत थ्रो बाय द वे फ्रॉम जमशेदपुर एफसी, जिसके थ्रू बॉल इस बार छीन लिया गया फिर से एक बार केविन डे ब्रुयना, एंड इसी वजह से खिलाया जाता है डे ब्रुयना को। जो लॉन्ग पासेस का एबिलिटी है उनके पास, वो बहुत कम प्लेयर्स के पास ही है, एंड उसका प्रॉपर फायदा उठा तो रहे थे, लेकिन उसी बीच में बॉल चुरा लिया जाएगा जमशेदपुर एफसी की तरफ से। राइट विंग से इधर निकालते हुए रोनाल्डिनियो, बट थियो हर्नांडेस के सामने वो रन कंटिन्यू नहीं कर पाए। Oh yeah. Now Theo Hernandez, let's see. Bengaluru FC have certainly been the better team so far, but are yet to find a break. This could be the potential opportunity with Ronaldinho. Wanted to do something over there, but Jamshedpur FC being very calm, very alert on defenses. That could have been really close, but Ronaldinho to Mbappe, both of them trying to make a run. Mbappe has been triggered for one, and now Ronaldinho from that right wing has also pushed in. We've got to see what the next move is going to be. Pass it on towards Bellingham, and this team of the year Bellingham card is so good, even on his shooting stats. We've seen Bellingham score a lot of goals and some very important ones at that. And now it's been a steady affair. Both these teams not letting enough openings. And Jamshedpur FC, we know that they're a very good co-op team. The way they had started off, but this time, again another chance wasted. Bengaluru FC, they've been creating so many of those opportunities, but haven't just been clinical in scoring. Yes. एंड स्पेशली विद जमशेदपुर एफसी, पिछली गेम पे भी हम लोग को उतना खास अटैक बनता हुआ दिखा नहीं था, बट आज बेंगलुरु एफसी की तरफ से एक चीज़ तो जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से इम्प्रूव होता हुआ दिखा है, वो है उनका डिफेंस। हालांकि वो पिछले दिन में भी अच्छे ही खेल रहे थे डिफेंसिवली, बट आज जिस तरीके से वो खेल रहे हैं अनबीटेबल दिख रहे हैं। बट क्या उसको तोड़ पाएंगे या फिर नहीं, वो तो अभी सेकेंड हाफ पे ही देखेंगे। बट फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा लाजवाब गया बेंगलुरु एफसी के लिए, उनके डिफेंस पे एटलीस्ट। एंड ऑन द हैंड इधर देखिए पोजीशनिंग पे थोड़ा ही आगे थे जमशेदपुर एफसी, एक सिंगल शॉट लेने का मौका इधर नहीं दिया गया था। एंड ऑन द हैंड बेंगलुरु एफसी की तरफ से भी सिर्फ एक ही शॉट लिया गया जो कि शॉट ऑन टारगेट था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो कहना है कि बेंगलुरु एफसी कोशिश कर रही है कि वो ज़्यादा क्लिनिकल रहे, बट ऑन द हैंड जमशेदपुर एफसी वो अभी तक कोई भी शॉट ही नहीं ढूंढ पाए। Yeah, I think this has been the beauty of this game, right? Both these teams are just trying to play end-to-end FIFA, trying to create. Most of the opportunities are being courtesy to those through passes where we have seen. But one good thing is both their defenses are pretty tight. They haven't made those mistakes usually, which we see a lot of players commit in these co-op games. But now Jamshedpur FC looking for a break, and this is one of those halves where we saw not even a single goal being scored, but so many chances being created, especially by Bengaluru FC, who are on the break once again. R9, he wants to receive the ball. KDB is trying to make a run, but comes down to Mbappe, goes for that shot, and there you go, scores also. And Bengaluru FC, that little bit of a chat that they had with each other together is going to be enough to give them that lead into this game. वन मोर टाइम ग्राउंडेड गोल, एंड ये जितने भी शॉट्स ग्राउंडेड जा रहे हैं वो सारे में स्ट्रगल करने वाले वेंडेसार फॉर श्योर। अगर हम लोग स्टैट देखते हैं वेंडेसार का तो उधर ही पता चल जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्सेस कम है। सो उसी का ही पूरा फायदा इधर मिलता हुआ। एंड देखिए ये चीज को वो आगे भी यूटिलाइज करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं वेंडेसार की, उनको जब भी खिलाया जाता है एटलीस्ट लोग कहते हैं सामने टीम ऑफ द ईयर कार्ड्स की, जैसे कि एम्बापे हो गए, मेसी हो गए, फिर रोनाल्डो, आइकॉनिक प्लेयर,
तो इन सारे प्लेयर्स के सामने जब आप खेलते हो तो उस टाइम पे एक एक भी अगर आपका स्टैट कम होता है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक का सिनेरियोज़ क्रिएट करते हैं। तो वही चीज़ शायद इधर हम लोग होता हुआ दिख रहा है। Oh, now we're off with the game yet again. Once more, a little bit of a substitution being made, and this is pretty much CJ's idea, right? Just get aloe vera up instead of Messi. Messi has done his part in the game, and Jamshedpur FC will not just being eyeing for an equalizer, but they have to score also a winner, because if they lose this one, again, folks, a quick reminder, then this is done and dusted for them. They would have they will be losing their ground game, so that is going to be another thing for grab ups over there. But now Bengaluru FC wanted to be a little attacking from the wings. Again, they've retrieved possession, so Jamshedpur FC cannot afford to let them, take the balls like this. As Hakimi has also made a run beautifully over there, passes it on towards, Alaveran KDB, and now it has been stolen. So again on a counter attack, let's see what can they produce with Kimi. Oh, this is a beautiful one. Looks promising with Ronaldinho. There you can see Messi has made the run already, but before he could even do anything, the ball has been stolen, and now it's again back for Bengaluru FC. यस, बेंगलुरु एफसी अभी तक जिस तरीके से उन्होंने डिफेंस किया है उसके बाद तो लग रहा है जमशेदपुर के लिए बहुत टफ होगा, बट हो सकता है कि एक चांस मिले जिसके ऊपर उनको कन्वर्ट करना हो गोल एंड उसमें वो कर दे, क्योंकि वो उनको बार बार चांस नहीं मिलेंगे। बट आई थिंक एक चांस तो शायद मिल जाएगा, बट लेट्स सी, वो तो टाइम ही बताएगा। वो दोनों ही टीम के प्लेस के ऊपर डिपेंड करेंगे। बट एज ऑफ नाउ बॉल कंट्रोल प्रॉपरली बेंगलुरु एफसी के पास। एक हो सकता है जर्मन क्रॉस, बट नहीं, थोड़ा लेट हो गए। जर्मन क्रॉस के लिए शायद जा सकते थे, बीच में से रोडली तो ऑलरेडी रन निकाल चुके थे टुवर्ड्स हिम। De Bruyne and finally with the goal again. एंड इस बार तो एक गलत ही पोजीशन में फंस गए थे वेंडे सार, जिधर से न हिलने का मौका था न जंप करने का। And has been capitalized again, a low driven shot, and that was all that was needed to end this. And this hasn't been one of those games where you could say that we saw a lot of goals coming in. Maybe, in these dying phases of the second half, Jamshedpur FC, goes all out, and then we either get to see Jamshedpur FC making a comeback, or it would be Bengaluru maybe scoring two more goals. But now, as things are, right, look at this. Jamshedpur FC have been denied even a single shot on goal. And such has been the beauty of defensive prowess of Bengaluru FC. And they have been working on their co-op, and the results are right in front of you guys. And this is where I guess, Bengaluru FC, they were one of the strongest contenders, and they still are. And what happened against Kerala Blasters FC, I think they have gotten back from it, especially CJ, that 3-0 loss. And finally, he's shown the community and all the viewers watching why Bengaluru FC possesses a potential threat in winning this year's eISL campaign. FC Goa and Bengaluru FC is going to be a match that we would all want to witness, because this would be something really out of the world. But again, trying to get in Erling Haaland, and Hakimi is still making sure that he doesn't get beaten. जी हाँ, और देखिए लाइक जिस तरीके से बेंगलुरु एफसी अभी तक खेले हैं, उनका एक प्रॉपर छाप वो छोड़ चुके ऑलरेडी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। लूशियो सेंडिंग जिडान टू बेलिंगम, एंड जिडान हम लोगों को इस बार टूर्नामेंट पे ज़्यादा यूज़ होते हुए नहीं दिखे। बहुत कम टाइम ऐसे हैं जिस पे हम लोगों को जिडान देखने के लिए मिला है, एंड उनमें से एक टाइम अभी है बट अर्लिंग हaaland के साथ। ओ, एक गलती हो गया था लूसियो की तरफ से, लेकिन आसपास कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं थे, इसके वजह से बच गए, नहीं तो 3-0 होने के चांसेस थे। और अगर स्कोर लाइन यही रहा तो शायद वो जो तीसरा गेम है सागनिक के साथ डेके का, वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मैच जीत के 3 पॉइंट्स अपने खाते में लेके चले जाएंगे बेंगलुरु एफसी। Now, let's see. I mean, this match is pretty much sealed, I feel. Bengaluru FC, the way they've been so brilliant with their defenses,
And now on their attacks, they're just looking so calm. I don't think they're making any hasty moves. They're just, okay, this could be one in the making. And there you go. A beautiful one, potentially coming in our next week's goal of the week. And such a well-coordinated pass, a long ball through. And just when we thought that, he's going to take a direct shot on goal, they opted to pass. And Lucio was the one who received it. So that's a little funny, but it's all right. Yes. And with this goal, I think इधर तो और कोई चेंजेस नहीं आने वाले, कम बैक होने के भी चांसेस बहुत कम है. एंड उसी के साथ पिछले 2 गेम में से एक ड्रॉ हुआ है, एक हार चुके थे जमशेदपुर, सो ये इनका दूसरा हार हो सकता है. बट ओवरन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे. बेलिंगम गलती हुआ था क्योंकि ओवरन पास दिए थे बेलिंगम को और बेलिंगम उसी मोमेंट ऑफ टाइम पे रुक गए थे, जिसकी वजह से ये गोल स्कोर नहीं हुआ. नहीं तो 4-0 के साथ भी, हालांकि अभी भी चांस है 4-0 होने के. एक शॉर्ट कॉर्नर बट नहीं, Look at नहीं how फिर far. से बुलाया जाएगा. Look at how far the keeper is. I felt, I wanted to see that, TT, to be honest, I wanted to see a direct attempt. I think in the last season, Imad had done that. Imad or Mufi, somebody of Northeast United FC had scored directly from a corner. And Imad is a cheeky player. Him and Mufu used to do things like that. And it was such a delight to watch them play, right? Missing Mufu a lot. And for now, Jamshedpur FC finding a consolation goal, and there they get it, an easy one. Just when, and this is something that maybe Bengaluru FC won't really mind at this point. The only thing that will hurt is they could not keep a clean sheet. यस. एंड फाइनली बहुत देर के बाद एक मौका बना पाए. एंड देखिए आज मौके की कमी बहुत ज़्यादा लगा है. लाइक वो मौका तो ऑब्वियसली आपको खुद ब खुद नहीं मिलेगा, आपको बनाना होगा. तो वो प्ले मेकिंग आज नहीं दिखा जमशेदपुर की तरफ से. आखिरी मिनट, आखिरी चांस, शायद सेकंड गोल हो जाए. अगर होगा भी फिर भी रिजल्ट पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे. लेकिन नहीं, इधर वर्जिल वैन डाइक टुवर्ड्स रोनाल्डिन्हो एंड वो बाहर बॉल भेज देंगे. और उसी के साथ मैच होता हुआ खत्म. एंड आई थिंक हम लोगों को पता चल चुका है कि पूरे इस मैचअप का रिजल्ट क्या है. यस, 3 पॉइंट जाता हुआ बेंगलुरु एफसी के खाते पे. एंड जमशेदपुर एफसी, उनके लिए जो सिचुएशन है वो भी थोड़ा बहुत टफ होता जा रहा है, क्योंकि 3 मैचेस में से सिर्फ एक ही पॉइंट वो ले पाए. हालांकि इस मैचअप का तीसरा गेम होगा, बट उसका कुछ ज़्यादा अभी रोल है नहीं. Yeah, Bengaluru FC not having a lot of difficulties winning this fixture, right? And they have been the better team. And like I had anticipated, right? In the first half, looked a little, two-sided, where it could be anyone's. Both of them were so good on their defenses. But commencement of the second half, and suddenly Bengaluru FC had figured out ways in trying to score goals. And Jamshedpur FC, well, you gotta give props to them. It's not easy to keep stalling the players of Bengaluru FC, especially the likes of CJ and Shagnik. But they still did a decent job. But eventually, in those end moments, you try to make those risky moves, risky plays. In turn, just exposing your defenses a little bit. And this goal, look at this. I mean, Lucio, out of everybody, he was the one who had made the run, and instantly gives a header back and a goal score. I think this was one of the very well synchronized goal that we had seen. But this one was a good consolation one, but came in too late into the game, and there could have been a possible second, and still that would have not changed the outcome. But we've seen in the past that Kerala Blasters FC had been on the receiving end of such debacles happening. But this is it, sealed by Bengaluru FC. So far, both the games that we saw today, even the previous one, also ended in the co-op only. The third game was just for just for the heck of it. It's a formality game, and this is where we've got the next matchup coming up in front of us. It's going to be Shagnik taking on DK. So DK, he was, I think, categorized as the most unluckiest player in the past eISL. Seems like the curse has not just been lifted, but has been transferred to Vagya from Odisha FC. Because TT, if you remember, how unlucky can a club be? Yeah,
लाइक आई लाइक वो चीज जो है वो एक कहने की हम लोग कह सकते हैं नाइटमेयर की तरह था उनके लिए। Yes. एंड वो चीज़ वो बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहेंगे एंड वो नहीं चाहेंगे कि उनके साथ दोहराया जाए वही सेम चीज़। तो आज तो नहीं होगा बाय द वे। बट देखिए ओवरऑल जिस तरीके से अभी तक गेम गया है जमशेदपुर के तरफ से, वाह, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उनको फिर से एक बार ड्राइंग बुक पे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो शुरुआत है वो उतना खास नहीं रहा एंड इसी के साथ उनकी तरफ से कोई भी एक ऐसा अटैक ही नहीं दिखा जिसके थ्रू वो इधर जाके फिनिश कर पाए, क्योंकि फिनिश करने के लिए टैग की जरूरत होता है। हालांकि लास्ट में एक गोल आया एंड एकदम एंडिंग मोमेंट पे एक और मौका बन रहा था, तो यस वही चीज। बट आज के ये गोलकीपिंग को देखते हुए वैंडे सार की तरफ से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि कोर तो अभी के लिए तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स, अगर हम लोग बात करते हैं डाइविंग और रिफ्लेक्सेस की। I think one other thing is that the players have gone back to their normal icons and team of the year cards. We're not seeing any more जी of those, fantasy foot players. I think there were a few occasions where Aloveran was bought on, but did not get to see Ginola, which is one of those go-to cards that we get to see a lot. And even in the last week, a हाँ lot of players were substituting Theo Hernandez for Alfonso Davis, and a free kick from a very dangerous position and a yellow card for Virgil van Dijk. Thank goodness it's not a red. जी एंड पिछले दिन ओह माय What? गॉड, लियोनेल मेसी, मेसी मैजिक एंड नॉट ओनली मेसी, देखिए तरह से वो एकदम परफेक्शन के साथ वो प्रेशर, पोजीशनिंग, सब कुछ था। व्हाट अ गोल! आई थिंक ये भी एक हो सकता है लाइक बेस्ट गोल ऑफ द वीक। That was not a goal, that was a missile launched by Lionel Messi, and the goalkeeper could not even react to that. But hold on, I mean Shagnik wants to get a quick equalizer, but I'm still trying to process from what DK just pulled off. Jamshedpur FC. And I said, that is one of those positions from where you could potentially score a goal. And Lionel Messi is really good with a free kick. But a goal of that class is something that you could only get to see with Lionel Messi. I mean, if you talk about the pace, if you talk about the curve, everything was just aligned right at the top left corner. And Van der Sar was just left stranded, did not even know which side to move. And before he could even decide to do anything, it was a goal. या बट इस बार काउंटर पे वारन, बट लूशियो सही टाइम पे इधर इंटरसेप्ट करते हुए। बाय द वे ये गोल देख के एक चीज तो फिर से पता चलता है, दैट्स व्हाई वी कॉल लियोनेल मेसी अ गोट। वो चीज फिर से दिखता हुआ वैसे जो गलीत। और देखिए बिल्डअप तो हो रहा है, बट हाँ लाइक मेसी फैन इसीलिए नहीं बोल रहा, बट अब मेसी के अंदर बात तो है। Yeah, of course I get it. I get it. All the CR7 supporters at this point would have already gotten a lot salty. And, I mean, can't even argue on this fact. Lionel Messi has won the World Cup, and not just that, you can't just say that it was his team who went on to lift the trophy. Of course, there was a lot of help, but Lionel Messi, even during the World Cup, he performed at such high levels. I think, and plus again, even in the FIFA world, have we seen any club yet opting for Ronaldo, even the rule breakers card, or maybe even the team of the week? No, hasn't been the case. Not even the flashback either. But for now, Shagnik back on his attack, passed it on towards Ronaldinho, trying to find that perfect room of opportunity to try and score. With Aloe Vera, went for that step over, decided Theo Hernandez is there to pass, and being a little bit more patient, and this is a chance. Oh, skill move too many, went for the shot but missed. या फाइनली निकी लेग का वो एक बार फिर से अपने जान पे जान आया होगा उनके लिए, क्योंकि जिस तरीके से
शाग्निक का अटैक पे जा रहे थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लग रहे थे। जी हाँ, बॉल कंट्रोल प्रॉपरली अपने पास रखने की कोशिश। वन मोर टाइम लेफ्ट हैंड साइड से अटैक बनता हुआ लियोनेल मेसी टुवर्ड्स ओलीत, बट हकीमी का इंटरसेप्शन आया, बॉल चुराया गया है रोनाल्डिनियो से। लाइक कभी कभार शाग्निक का लॉन्ग बॉल्स खेलते हैं इस सारे पोजीशन से, सो मुझे लगा था कि शायद एम्बापे के लिए खिलाएंगे, लेकिन नहीं, अभी शॉर्ट पासेस के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हुए, एंड ऑब्वियसली जीत चुके हैं बेंगलुरु एफसी, सो इसी वजह से थोड़ा बहुत शायद न्यू जो टैक्टिक्स है या फिर न्यू प्ले स्टाइल है उसको ट्राई करते हुए दिखेंगे मे बी, बट बॉल कंट्रोल प्रॉपरली अपने पास ही रखते हुए अभी तक शाग्निक, बट बात करते ही करते उसी टाइम पे बॉल छीना गया। Oh yeah, and DK, he's been phenomenal. We know DK has one of those capabilities of giving those German crosses and scoring goals. Sometimes that you would kind of have your jaws wide open. How did he do that? And he's already given us one of those moments today, and is potentially searching for one more. And this is where you get to see DK at his supreme best, when he's playing without any pressure. Knows no matter what the outcome is, it's sealed for them, their fate, because they have lost out on those 3 points. We'll have to look forward for the next matchup. But Shagnik looking for an equalizer. Will give a pass towards R9, and look at how tight DK's defense is. Does not shy from getting all his central midfielders back on the defense if needed. And now, well, this is a good chance. A step over and a shot. A little bit of deflection coming into play. I think there was a little deflection. Yes. एंड आई थिंक उसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था रैंडेसार के ऊपर, बट या फाइनली वो सेव ये तो है, लेकिन शाग्निक बार 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 अटैक पे जाते हुए प्रेशर फुल्ली जमशेदपुर एफसी के ऊपर। एम्बापे, मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा स्किल मूव हो गया, नहीं तो एक मौका था रोनाल्डिनियो को दे सकते थे, बट एक बार फिर से बॉल कंट्रोल तो है रोनाल्डिनियो के पास, लेकिन उसी टाइम पीरियड के ऊपर थी, और हर्नांडेज का वो इंटरसेप्शन जिस तरीके से उन्होंने पुश किया, चार्ज किया, वो जरूरी था, बट ये गोल हो सकता था। शाग्निक मुझे लगा एम्बापे के साथ थोड़ा ज्यादा ओवर स्किल्स पे चलेगा। And there you have it. The first half whistle being blown, and after it, it's been an end-to-end game where Shagnik has been trying to create so many of those chances, but has failed so. And DK looking really good in terms of his defense at least. But courtesy to DK's beautiful screamer of a free kick there, Jamshedpur FC at least have a lead in this game. And it's going to be really important on mental level for DK also to kind of go on and start winning games. Because Jamshedpur FC, I think they're a much better team on co-op, but individually, I think Arvin's been the one who's been the better player amongst the two. And DK, he has everything in his arsenal. It's just that he needs to start delivering, needs to start giving results for his club. And this time, we are just hoping that he comes out through winning his matches. But for now, we've got DK again. This time, pass towards Mbappe. Ronaldinho was on the run, but was a little reluctant, as a result of which Shagnik has stolen the possession away. ये फिर से मौका एम्बापे निकलते हुए। What? Why? नहीं, यही चीज पिछली बार भी हुआ था, थोड़ा ज्यादा स्किल मूव के चक्कर पे इधर जो गोल्स है वो मिस होता जा रहा है, बट काउंटर पे आ चुका है डिकी विथ लियोनेल मेसी टुवर्ड्स रोनाल्डो टू एम्बापे, बट उस जगह पे भी बॉल रोल की जरूरत था, जो कि हुआ भी, बट उतना डिस्टेंस नहीं कवर कर पाए जितनी जरूरत था। Oh, I mean, yeah, this is where Shagnik also he needs to consider, not trying to go for those extra skill moves. Maybe because he does not have any pressure, so he's just want to have fun. I think that is his intention. I think I've kind of figured it out. Because either ways, Shagnik should be taking shots, but it's like his, kind of a warm-up practice game that he's considering this matchup to be.
because he knows that he does not need to sweat it out. He can rather just focus on playing against a really good player and trying to just show his skills for his club. If CJ can do that, I can do that as well. And like I said, a few skill moves, or like rather even you've also pointed that out, not just once but multiple times. Skill moves too many being displayed by Shagnik, and hey, I think he can afford it at this point. यस एंड ऑलरेडी वो आगे है एंड उसी के साथ 3 पॉइंट्स उनके पास है बट विद द शॉट ठीक है कोशिश था लीड को डबल करने की बट वो फिलहाल के लिए नहीं हो पाया ग्राउंडेड शॉट भी था लेकिन लेफ्ट साइड पे मार बैठे जिधर बहुत क्लोज थे वेंडेसार देखिए जिस तरीके से वेंडेसार को एडवांस किया गया था एक ऑब्वियसली ओलंपिक गोल के लिए ट्राई कर सकते थे बट वो किया नहीं गया आई डोंट नो व्हाई क्योंकि हम लोग 23 पे तो देखे हैं इसके पहले भी ओलंपिक गोल होते हुए I mean, you would love to see goals like that, right? Being scored, and I think now this is a golden opportunity for Shagnik as he's broken through, and okay. Why was I surprised there? I think DK also knows that Shagnik is just pretty chill right now. He's just wanting to make use all the skill moves that he's learned, and he's just trying to master it. As a result, and we would have seen 3 or 4 more skill moves being shown over there. But DK, you can see he wants to sweat it out. He wants another goal. So far, 70 minutes have gone into the game already, and this is a good chance where DK can actually make it 2-0. Mbappe passes on towards Bellingham, gets back on Mbappe, but that touch was, I think, a little heavy and got deflected instantly over. Wow. What a control towards Ronaldo and finally शॉट तो लिया गया यही ज़रूरी था जो अभी तक नहीं हो पा रहा था फर्स्ट शॉट मोस्ट प्रोबेबली अभी तक एंड बचाते हुए वेंडेसा राइट हैंड साइड से रोनाल्डिनियो रन निकालते हुए ऑब्वियसली एक ऑब्वियस चॉइस से बट देखिए इधर पावर शॉट की कोशिश कर रहे थे उसी के बीच में जो टाइमिंग मिला उसी टाइम पे इधर इंटरसेप्ट किया गया टैकल किया गया जिसके थ्रू बॉल जा चुका है एक बार फिर से बेंगलुरु एफसी के पास बट ऑब्वियसली एक ही गोल का लीड जो कि आपको क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं दे सकता बहुत शानदार इधर चार्ज किया गया हकीमी की तरफ से एंड बहुत क्रूशियल पोजीशन पे भी क्योंकि उधर से अगर निकल जाते तो शायद एक और शॉट ऑन गोल हो सकता था had Virgil van Dijk not made that interception there, I think we were looking for another one for DK. Now the final 10 minutes into the game, and DK has been showing those signs of attack multiple times, trying to just pierce through Shagnik's defense with those through passes. But now let's see Shagnik what more skills he's got on display this time. Decides to take a shot, but whiffs it. And as we said, right? Finally, he said, like, you know what? Let me just equalize it. Let's not lose a game. And he actually wanted to take a shot. This time did not work. या एंड ये बाहर जाता हुआ एंड उसी के साथ 7 शॉट्स लिया गया है बेंगलुरु एफसी की तरफ से शॉट ऑन टारगेट मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को देखने के लिए मिला है 2 एंड उसमें से एक भी गोल स्कोर नहीं हुआ ऑब्वियसली बट ऑन द अदर हैंड जमशेदपुर एफसी उनके 3 में से 2 शॉट्स हम लोगों को इधर शॉट ऑन टारगेट देखने के लिए मिला एंड एक गोल स्कोर भी होता हुआ दिखा है एक्सपेक्टेड गोल्स भी इधर कम है जमशेदपुर एफसी की तरफ से बट फिर भी वो स्कोर लाइन पे आ गया जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड वही चीज निकल के आता हुआ पास एक्यूरेसी काफी ज्यादा है बेंगलुरु एफसी का बट ये सब कुछ देखिए ये तो स्टैट्स है आपको गोल करने की जरूरत है जो कि अभी जमशेदपुर एफसी ऑलरेडी कर चुके हैं बट एक ही गोल का लीड आई डोंट नो क्या ये आखिर तक लीड बना रहेगा या फिर नहीं Look at this, DK making so many substitutes along with Shagnik also. Both of these players not shying out, want to see this through. This time Shagnik wanted to go in, but Lucio comes with that intervention over there.
And now Theo Hernandez has options, a lot of options in fact. And now DK is again broken free with Messi. Look at Virgil van Dijk just around him. That huge presence. And now this is where David Ginola needs to shine. Goes for a ball roll, but Virgil van Dijk for DK saves the day. And the final 2 minutes of the game where Bengaluru FC still had that chance, but yeah, it was kind of floundered. But at this point, DK looking for a 2-0, looks for that W against a club like Bengaluru FC, can get it, and yes, he does. Wins the game in style. Scores in the dying moments. This is the winner. This is the decider. And Jamshedpur FC winning their individual game. But we all know that they won't be happy with the result because could not secure any point tonight. Yes. And with that, finally, Bengaluru FC ये गेम वो जीतते हुए ओवरऑल पे, बट शायद ये मैच नहीं, काइंड ऑफ लाइक ये ओवर जिस तरीके से अभी तक गया ये गेम बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. बट आई थिंक शाग्निक के पास भी बहुत सारे ऐसे चांस थे जिधर से वो क्लियरली गोल स्कोर कर सकते थे, बट वो एक्स्ट्रा टचेस की वजह से हो नहीं पाया था. बट जमशेदपुर एंड स्पेशली फॉर डीके ज़रूरत था ये विन की, क्योंकि उनका उतना खास नहीं है अभी तक का सीज़न. सो ये जीत के साथ उनको खुद को कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिस कॉन्फिडेंस को वो आगे ऑन द लाइन जितने भी मैचेस है उस पर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड वो यूटिलाइज भी कर सकते हैं. सो या वो तो बात की बात है, बट आज के दिन के जो दोनों ही गेम्स हैं वो हम लोग को बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग देखने के लिए मिला है. बादल, Yeah, but this was not a very high-scoring game. In fact, we saw Shagnik on multiple occasions just creating chances and dribbling in that final half, trying to create a goal at least for his Instagram reels and even for us. And if you haven't checked it out, don't forget to follow us on our social media on eISL and even on Nordwin Gaming. So you can get all these beautiful goals, these saves, everything available over there. And in that dying moment with Mbappe, you don't miss, right? Pretty much when you have straight opening towards a shot on goal. DK finally getting a win individually, and he'll be really happy about that. But as a club, Jamshedpur FC really need to wake up, because these are still those early phases of these tournaments. We've got an overall 55 matches to be played. This is just match number 17. So anything can possibly happen. But Bengaluru FC finally getting those 3 points secured. I think now they would be making their entry into the top 4, or maybe even top 3 potentially. But today has been rather a good day. A good day for Bengaluru FC. But now is the time where we find out who the MVP was. Any guesses? Has to be the demon himself, Charanjot. This time did a little bit of a change in his playing style, went a lot for those short passes, and still has managed to score 4 goals. यस, बहुत बहुत ज़्यादा शानदार. एंड यही चरणजोत को हम लोग जानते हैं. पिछले दिन शायद खोसा गए थे, बट ऑन द अदर हैंड हम लोग को शिवम की तरफ से भी बहुत अच्छा गेम देखने के लिए मिला था. दैट्स वाई चरणजोत आउट परफॉर्म हो गए थे. बट आज के दिन पे ये 4 गोल्स के साथ जो गोल डिफरेंस है उसको भी उन्होंने पूरा कर दिया, क्योंकि अभी तक जीतते हुए आ रहे थे. पिछले मैच पे हारे 3-0 के साथ, आज 4-1 कर दिया. सो जो गोल डिफरेंस बना था वो अभी 0 पे आ चुका है. एंड या पॉजिटिव वे है. सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेंगलुरु एफसी के पास एक बहुत ही अच्छा खासा शुरुआत मिला है. एंड नॉट ओनली शुरुआत, उनका टीम भी बहुत स्ट्रांग है. हालांकि आज शाग्निक हारते हुए दिखे, बट आई थिंक अगर वो थोड़ा सा जाके देखेंगे मैच को, फिर उनको पता चल जाएगा कि किधर उनको काम करना है. सो या वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट तो है ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग, बट या आई थिंक वो इजीली किया जा सकता है इम्प्रूव. You know what, TT? I think it's time to see how things have stirred up on in terms of our leaderboard, right? Let's take a quick look and see after these 2 games that have been played, where do these teams stand? So Bengaluru FC, they've managed to, come into that 3rd spot, right? And then when you talk about the previous matchup, where we saw Chennai FC winning it and still are yet to lose any game, are now sitting at the 5th spot. So considering Mumbai City FC has played 1 extra game, Bengaluru FC still has a chance where they could best them if they win tomorrow's matchup.
and could get to that second spot. But regardless, I think for clubs like Odisha FC, Kerala Blasters FC, and Jamshedpur FC, even you can start counting ATK Mohan Bagan right now. They have to, they have to do something. जी हाँ, बट या उनके पास अभी भी मैचेस है बहुत सारे जिस पे वो शायद इधर कम बैक करने वाले हैं। अभी तक तो हाफ लीग स्टेज पे भी नहीं पहुंचे हैं एंड बहुत सारे टाइम ऐसे भी होता है कि आपका जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो जब भी हम लोग बात करते हैं फीफा की एथलीट्स के, कभी कभार जो फॉर्म है वो भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब लीग होता है, लाइक लंबे लंबे लीग पे। तो देखना होगा लाइक किस तरीके से कंसिस्टेंसी बना के रख पाते हैं ये सारे प्लेयर्स एंड किस तरीके से वो आगे बढ़ पाते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इस पूरे EISL सीजन 2 पे। Well, definitely, it's going to be important, and it's just 17 games played right now. So many, much more to go. But that being said, ladies and gentlemen, finally we are done with all our matches for tonight. Usually we have three, but today we had two in store for you. So we are going to be calling it a night. Tomorrow we are going to be back again. Till then, you guys take care and have a good night.